All right. Okay. So now we will start for the today related to the document understanding. Okay. So what is a document understanding? Basically, to extract the data from the documents. Okay. So previously, we have seen, right, we are able to extract the data from the native PDF, or we are able to extract the data from the uh, scan PDF. Okay. But just suppose uh, there we have used some expressions, right? And we have splitted the string or text, and then we have extracted it, right? So we have taken the reference or positions. Okay, we have taken the reference or positions, right? Uh, for those particular words or strings, and then we have extracted, right? But by using this document understanding thing, basically, right? What we can do, right? We can take the position, okay, and will not go with any other reference like between this word and this word, or between this string and this string, right? So we'll give the uh, reference directly, position reference. It will extract the data, and at the same time, if you want to add a human in the loop, okay, then we will add the human in the loop also, just to verify it has extracted the correct data or not. And in case it is not extracted the correct data, okay, what will happen, basically user can update or the human can update, and then it will get processed. Okay, so that's the reason we have this document understanding framework, right? But just want to tell you, like, I don't think so. Like more than 4 to 5% people are using this. Okay, because first thing, it's like if you want to use this product, we have to take a separate licensing, right? And the license cost is high, so it will not come directly when we purchase the studio, when we purchase the assistant, or when we purchase the orchestrator. We have to purchase separately. On top of that, we have to use the OCR engine here, right? So if you want to use the OCR engine, right, if it can be done with the free product, it's perfectly fine. But if it's not, then again, organization has to spend some extra amount on the OCRS. Okay, and after doing all those things, also this accuracy, uh, right, and the variations on it is working right. That it's not that much great, basically. Okay, so soon they are planning to phase out this one, and they are going to the cloud, okay, where they are having all these AIML capabilities, but it is not yet open for the organization yet. Okay, it is just in like a community, or we can say just in a preview phase, basically. But we'll see whatever we have into the studio. Okay, so let's start. Maybe mainly from the document understanding purpose or the document automation purpose. If the organization want to go with that, right? uh, and it can be any data, right? It can be handwritten, it can be scan, right? It can be native, it can be image, it can be PDF, right? So Microsoft having its own product called as a AI builder. Okay, maybe you have heard about the word as a Power Automate, right? So that is more capable and number one into the market, and easy to implement. So organizations are using that component in case it's the document automation, and it will come uh, along with Microsoft 365 license. Okay, so every organization having their Microsoft 365 license, and they can use it. Okay. So we'll start. First thing what we have to do, we have to download the package. Okay, so we have to download a very specific package, because here it will give errors otherwise. So we have to download this package called as a document, sorry, intelligent OCR activities. Okay, and use this version 6 dot. Okay, I think they have it. Okay, 6.19.0. Okay, so we'll go here, go to the manage package.
all package, this one, intelligent OCR package, and we have to go with 6.19.0. Okay, so go ahead, 6.19.0, install it and save it. Okay, so install this package. It will take little more time as compared to our normal package. So just start this particular package. Okay, so you can see it has taken a good amount of time for the installation. Okay, and document understanding having certain steps basically. Okay, so what are the certain steps are there for document understanding, right? That I will give you. Okay, so this is common steps basically. So what will happen as soon as we have installed this intelligent OCR package, right here we can see as a taxonomy manager. Okay, it will get added here. So just click on the taxonomy manager. But before that, so you can see this is the document basically. Okay, I have shared this document with you people. We'll try on this document. Okay, so we'll copy and we'll store it to the project. Yeah, right. This doc. Now I will open. Okay. So from this document, suppose I want to extract FCC ID, I want to extract model number, or we can extract anything, right? But we'll try to extract these two fields basically. Okay. So for this, what we have to do, first thing, like steps I have already given, right? First thing what we have to do, we have to click on the taxonomy manager. So what is the taxonomy manager? What it is doing, we'll talk about it. Okay. So basically in the taxonomy manager, we have to define the skeleton. Okay. Skeleton means simple skeleton like what you want to extract it, what are the different groups are there, what is the document type, right? All those things we have to do it. Okay. So first thing we can mention group. So it belongs to which group, right? So data extraction and this group name, right? There is no relevance. This is just for uh, taxonomy manager point of view. Okay. So here maybe we can mention mm, like invoice. Okay. Invoice. Okay. Click on the save. Once it is done, right, we have created the group, right? Then we have to create a category. Okay. So we'll mention this BCTC invoice. Okay. BCTC invoice. Save it. And then we'll mention document type, right? What is the document type? Maybe we can mention scan invoices. Okay. Scan invoice. Save it. I saved it. After we go here, right, it will ask the field. It will ask the field, like which field we have to extract, right? Then click on the field. Okay. Give the field. For example, XTC ID. Okay. And what is the type of the field? Text, number, date and time, address, boolean, right? So this is text because it's a combination of alphabets and numbers, right? Click on this. Then another field. What is the another field? Right? Model name. So we can go here, type as a model. Okay. Select as a text and save. Right? So you can see we have just defined this taxonomy manager. Okay. Now what happens here? It will get saved automatically. We no need to do any other extra thing. So we can close this. Okay. And we can modify also at any point of time. So this is our folder structure, right? But what happens as soon as we are creating this taxonomy or we are adding this package and then we will go to the taxonomy manager and we'll create this group, document type and fields, right? If you refresh this, can you see it will create one folder called as a document understanding, okay? And under the document understanding, it will create this taxonomy JSON, okay? So
whatever the group we have created, category we have created, right? Those things will be available. Okay. So we no need to do anything with this. I am just explaining. In the background, it will create the JSON file. Okay. And why it is creating? Just to create a schema. Okay. So that we can use it. We can use it whenever we require it. Okay. So that is the reason. So we no need to do anything here, right? So in this way, what we have created this taxonomy manager. I have shown this taxonomy.json. So you can see taxonomy.json. Then what is the next thing, right? If you go here, load taxonomy, we have to load this. Okay. So whatever this schema it has created, we have to load it here, uh, and that can be used to extract the data from the document. So type load taxonomy. Okay, load taxonomy. So it will load that particular uh, schema by using this load taxonomy, right? And here we don't need to do anything. We have to just create a variable taxonomy. That's it. Okay. So now we are able to load this taxonomy by using the load taxonomy. Okay. What is the next step? I will not do all the things at a time, right? We'll just do this step and then you people can go. Next step is a digitized document. Okay. Digitized document. Go digitized document. In a digitized document, what we have to do? We have to give the document path, then it will create the output from it. Okay. So, and this is just for reference purpose to create our taxonomy or to create the template. After that, we can work on number of innovations as well. So I will here mention document path. Okay. Document. So where is the document? This is the copy as well. Okay. So go here, right? Document path I have. After that, here we have to give the variable document text. Basically, what this activity will do, it will extract the data from the your file. That's it. Okay. Apart from that, there is no other thing available. Okay. Document text, right? And it will create a document object model as well. Okay. So that model will be used while data extraction. Okay. So DOF I will mention document object. Okay. And you can see it is using this UiPath document to share by default, right? In case it is not working, we can use any other OCR engine here, right? So now we are done this and we'll use a message box and see it is working or okay. So here document text. Okay. Hmm. Save it and run. And it will take time, okay, because it's like a image PDF, right? Can you see? Now it is able to read the data perfect. Okay. But what it is doing, it is reading all the data. We don't require all the data, right? We need specific information to be extracted from this document. Okay. Right. So just prepare the flow till this point and then we'll go to the further. And let me know in case of any difficulty while package or this taxonomy manager. Right? And if you want to see, right, just click on the taxonomy manager tab, right? It will able to show us whatever we have created. Like, let me go back, right? So this is not required, no message box, right? So we have just taken that message box just to see are we getting the right data or not. After that, we have data extraction scope. Okay. So what is the data extraction scope? We can go here.
we have to take this data extraction scope. So its name suggesting here we have to define like which data we have to extract and all, right? Those things we have to mention here. So here we'll mention document path, right? Document path. Here we have to mention taxonomy, right? Here we have to mention document text, right? So all those variables are already document text. Okay, this is document option. After that, control K. This is extraction result. Okay, so it will be the output after the extraction, right? And it is saying drop extractor here, like, okay. So here we have to extract the data. So we need extractor. Okay. So extractor is already created here. Form extractor. Okay. And add it. I have added it. Okay. By default, it will take this endpoint URL API connection from your license. Okay. But for community, it is available freely. But if you go for enterprises, we have to purchase. Then click on the manage template. Okay. Click on the create template. Okay. So please select. So this is our template. Okay. What is the template? Scan invoices, which we have given it. And template name. Maybe we can mention PCTC template. Okay. Select a document. This is just for reference purpose. Huh? Okay. So where is your document? Okay. Here it is. Not the document. I added it right. Okay. So let me add the document into this. But I have already added. But why it is going by default there? Okay. Let me take this part. Okay. This is open the document. Right. It will apply this OCR engine, endpoint, API key, everything, right? And apply OCR on PDF. Make it auto. Click on the configure. Why this auto? Okay. So suppose it might happen, we can have native PDF or OCR PDF. So if it is native, it will not apply. If it is OCR, it will apply apply the OCR. So now it will mention digitizing the document. Okay. Once you click on the digitizing document, you can see this screen. Okay. So what this screen is saying, basically it has given some important instructions. Okay. So what are those important instructions? Like at least we should select, okay, 5 elements from this particular PDF or document, so that whenever this PDF will come, right, this extractor will understand, yes, this is the right PDF. Okay. And accordingly, it will be able to read the data from there. Okay. So let's go. And here they will select the value which you want to extract, and also I will show you that. But most important, the first instruction. Okay. Now click on the OK. I just clicked on the OK. So can you see on the left hand side? You can see there are 3 sections: page matching info, FCC ID, model name. Right. So first go to the page matching section. Right. If you go to the page matching section, right? Uh, what we have to do? We have to indicate 5 elements from this, right? So that it will be available whenever this particular PDF is arrived. Okay. So now how can we do this? Go here. First we have to click on page matching info, right? If you go here, right, press control, select this, control, keep control press already. So FCC, test, report, and this. Okay. So I have indicated 5 or more than 5, it's also fine, but minimum is 5. Click here. So you can see those words will get added here. Clear? Now the next thing, what we have to do basically, right? We have to mention, or we have to indicate
which field we have to extract. Okay, which field we have to extract, right? So what are the field we have to extract? We have to extract this FCC ID and model name. Okay, so go here. Can you see the selection mode? Right? Select custom area. Okay, select custom area. So we'll select the area. Okay, so select the area like this. I have selected it, right? Select it properly, and then go here in the FCC ID section and click on the plus, right? So it will show I have extracted this, and you can see the color as well. Same thing, go to the model name. Okay, this is our model name, right? Go to the selection mode, custom area. Okay, select. I have selected, right? And click on the plus. Now we are done. Click on submit. So I have submit, right? Then close. Okay. After that, click on the configure extract. If you maximize this and if you expand this, right here, we have to just give like I want to extract all the fields. So here we have to configure. Okay. Now here it will ask the confidence score. What is the confidence score basically? Right? Confidence score is like that. How your model is confident to extract this data. Okay. So if you want to give, we can give it, right? But what is the good confidence score basically, right? If we are having more than 70%, okay, or 80%, that will be considered as a good confidence score. So I will mention minimum should be 70, maximum can be good, but not less than that, right? Then click on the save. Okay. Now it is asking, it is still giving error. Okay, like we did not provide it. What is the error? Provide the classification result or document type ID. Okay, so we don't have classification result. We'll give document type ID. Where we will get document type ID? Into the taxonomy JSON. This one, right? Can you see this document type ID? Right? Copy this or copy with along the quotes. Perfectly fine. Go here. In double quotes, we have to give it document type. Okay. Now it is not giving any error. Okay. After that, this step is optional. Okay. This step is optional. Then you will ask when we have to use it, how we have to use it and all, right? So we'll talk about. Okay. So use this present validation. Present validation. Okay. Take this. Then it will ask document path. Okay. Document text. Right. Document object model. Document object model. Okay. Taxonomy. Taxonomy variable. Right. Automatic extraction result. It is coming from here. Right. Extraction. And here validation extraction. Means after the validation, what is the result? Right. So validate extraction result. Right. And now we can run. Okay. It is started. It is giving some error. Validation cannot, no input file available. We have given the input file, right? Cannot be no input file. Let me stop and run one more time. We have given, right?
Okay. Still it is saying the same. Okay, no worries. So you can see same thing I have created here. Okay, till this point. Okay, forget about this. We'll talk about it later. I will put the breakpoint. Okay, now we'll run. Can you see we are getting this? Okay, click on the OK. Right. So this is the step we are getting due to the due to the present validation. So what is the purpose of this present validation? Is like that. Okay. Suppose here it is giving the FCC ID, right? Now it is D, okay, and you can see this confidence score 100%, 97%, right? So here it's a D, okay, in the document, but it is coming as a O, for example, right? Then what human can do, can go here, select as a D, and then submit the changes, okay? So if there is any mission critical process, okay, where there is like we can say even though it's like once in a while or a small what we can say mistake will not be accepted, okay, so in that process we can add this present validation, okay, otherwise we know it is working perfectly fine, then it is not working, right? And then click on the submit. So as soon as you click on the submit, what it will do, whatever we have modified here, right, it will take those changes, save and confirm, and those changes we will be able to see into the valid extraction result or whatever this variable we are giving here, it will be available there. Clear? Okay, so please go ahead and try. Let's see you are also getting this error or not. I given the path, right? Let me check. Oh, correct, right? It is showing path, so I have to give the path here because I have created this variable and I did not given the path, right? So yes, it's my mistake. So this is can do this copy as a path. Yeah, now it works. So now it's work. And here you can see it is showing 100% confidence for all the. Okay, so till you are done this till this point. So with this data extract. ये एपीआई की कहाँ से मिला? Which one? एपीआई फॉर्म एक्सट्रैक्टर में जो आप लिखे हुए हैं ना? ये आप यहाँ पे लिखे ना फॉर्म एक्सट्रैक्टर यू विल आई पुल्ड वो एपीआई की नहीं आ रहा है, एंड पॉइंट आ रहा है. ठीक है. आई डोंट थिंक सो कि इट्स रिक्वायर्ड. एक बार ट्राई कीजिए. हाँ, वार्निंग है. वार्निंग दे रहा है.
हाँ आपका ये कनेक्शन है, कनेक्टेड है यहाँ पे, हाँ, वो दिख रहा है। तो इट शुड कम, क्योंकि ये लाइक इट विल कम ऑटोमेटिकली। हाँ नहीं तो एक बार आप बंद करके फिर से ओपन कीजिए और एक बार। हाँ, आप क्या कीजिए, ठीक है, yes, गो टू द क्लाउड डॉट, ओके, यहाँ पे जाइए UiPath.com पे, प्रिंस, ठीक है, फिर साइन इन पे क्लिक कीजिए, क्लिक ऑन द साइन इन, राइट, जैसे आप क्लाउड पे आ जाओगे तो हियर वी आर हैविंग एडमिन, लेफ्ट हैंड साइड पे एडमिन दिखे, क्लिक ऑन द एडमिन, एडमिन के बाद आप लाइसेंसेस में चले जाइए, ओके, हाँ, फिर रोबोट्स एंड सर्विसेज, और ये यहाँ पे लिखा होगा डॉक्यूमेंट अंडरस्टैंडिंग, तो ये दिख रहा है आपको एपीआई चीज, राइट, ये बस कॉपी कर लो, कॉपी करके वहां पे डबल कोट्स में ऐड कर दो। ठीक है, इसके बाद फिर क्या करेंगे हम लोग, राइट, वी आर गेटिंग द टू डेटा सेट, ओके, जो एक्सट्रैक्शन होके आता है ना, वी आर गेटिंग टू डेटा सेट बेसिकली, तो क्या होता है ये भी मैं बताऊंगा। तो व्हाट इज द नेक्स्ट स्टेप, एक्सपोर्ट एक्सट्रैक्शन रिजल्ट, ठीक है, तो मान लो कि यू आर यूजिंग दिस प्रेजेंट वैलिडेशन स्टेशन, तो आप इसका आउटपुट दोगे यहाँ पे, राइट, इफ यू आर नॉट यूजिंग प्रेजेंट वैलिडेशन स्टेशन तो आप ये आउटपुट दोगे, ठीक है, राइट, तो बोथ आर डिफरेंट, राइट, तो हम लोगों ने ये दिया है बिकॉज वी आर यूजिंग इट, राइट, फिर वी हैव टू क्रिएट अ वेरिएबल कॉल्ड एज अ डेटा सेट, ओके, so it is creating two data set, right? फिर हमें क्या करना है कि वी हैव टू अप्लाई फॉर ईच, ओके, we have to apply as a for each, okay, so normal for each, for example for each, yeah, okay, normal for each, take this, right, and it will create in terms of tables, okay, दो टेबल बनाएंगे यहाँ पे, तो we have to give the output यहाँ पे data set dot tables, तो जैसे आप data set dot tables करोगे, right, what will happen, automatically for each का naming change हो जाए, so you can see here, okay, ठीक है, नहीं हो रहा है, ठीक है, what it is, करंट डाटा, ठीक है, हाँ, तो व्हाई इट इज नॉट हैपनिंग, बिकॉज आपको आइडियली इट्स नॉट रिक्वायर्ड, आई एम आल्सो यूजिंग द लेटेस्ट वन, ठीक है, व्हाई इट इज नॉट हैपनिंग, बिकॉज आपको यहाँ पे जाना है ऑब्जेक्ट है बाय डिफॉल्ट, तो वी हैव टू सिलेक्ट एज अ सिस्टम डॉट डेटा टाइप, राइट, फिर आप देखोगे तो इसका नाम नेमिंग कन्वेंशन चेंज हो जाए, राइट, आफ्टर दैट क्या है कि वी हैव टू राइट इनटू द एक्सेल, तो राइट एक्सेल के लिए हमें क्या करना है कि वी आर टू यूज द सेम राइट रेंज वर्कबुक, राइट, एक्सेल फाइल पाथ, and as I said it is creating two data set, right, so that's the reason we have mentioned current data table dot to string, right, और ये current data table कहाँ से आ रहा है, यहाँ से आ रहा है, right, current data table dot to string, तो जो भी डेटा टेबल का नाम रहेगा, राइट, वही हम शीट को नाम देंगे, तो इट विल क्रिएट अ टू सेपरेट शीट, दो डेटा शीट है ना, तो इट विल क्रिएट अ टू सेपरेट शीट, और फिर डेटा टेबल चाहिए तो हम लोगों ने डेटा टेबल यहाँ पे दे दिया, ओके, तो हाउ इट विल वर्क, ये भी मैं रन करके देखते राइट, नाउ दिस इज प्रेजेंट वैलिडेशन, बट हम लोग कुछ नहीं करेंगे यहाँ पे बिकॉज इट इज गिवन द करेक्ट रिजल्ट, क्लिक ऑन द सबमिट सेव एंड कंटिन्यू, राइट, क्लिक ऑन द कंटिन्यू, हो गया आपका कंटिन्यू, ठीक है, तो गो टू द प्रोजेक्ट, राइट,
दिस इज आवर प्रोजेक्ट फोल्डर और दिस इज आवर XLS फाइल. So it will create file as well. अगर फाइल नहीं है तो it will create file also. So you can see it has created two things, simple fields and simple fields formatted. तो ये दो डेटा सेट बनाता है. ओके अपने आप बनाता है. वी नो नीड टू डू एनीथिंग, राइट. तो सिंपल फील्ड में क्या है कि वट एवर वी हैव गिवन, सिंपल मतलब एज इट इज, राइट. जैसे एप्लीकेशन से कैप्चर करेगा एज इट इज. एंड सिंपल फील्ड फॉर्मेटेड मतलब क्या है कि सपोज दिस इज योर FCC ID, राइट. तो FCC ID आपको मान लो कि ऐसे आ रहा है, इट्स कमिंग लाइक दिस, ऐसे कुछ भी अलग आ रहा है, राइट. आफ्टर द एक्सट्रैक्शन या इन बिटवीन दैट इफ हैविंग एनी gen characters or any other things basically, right. So what it will do, it will remove it. Okay, मतलब it will format it basically, right. तो आपको ये ऐसे आउटपुट. so that's the difference between simple fill and simple fill format. ठीक है. तो एट दिस आई थिंक आपका यहाँ तक हो चुका है, राइट. टिल दिस प्रेजेंट वैलिडेशन स्टेशन, देन एक्सपोर्ट एक्सट्रैक्शन रिजल्ट एंड दिस फॉर इच ऐड कीजिए. ओके परफेक्ट, राइट. नाउ वी विल सी द नेक्स्ट थिंग, राइट. गौतम वाज टॉकिंग अबाउट ऑब्जेक्ट रिपोजिटरी. ठीक है. तो गौतम बताइए, आपको कुछ आइडिया होगा कि क्या होता है ऑब्जेक्ट रिपोजिटरी वगैरह. एक्चुअली जैसे हम लोग ऐसे काम करते थे कि जैसे हम एप्लीकेशन को ऑटोमेट कर रहे हैं, तो उसके अलग अलग जैसे वेब पेजेस है, तो हर एक पेज का हम एक ऑब्जेक्ट रिपोजिटरी, हर एक एलिमेंट को कैप्चर करके उसकी एक रिपोजिटरी और लाइब्रेरी बनाते थे, ताकि जैसे एप्लीकेशन के नए नए वर्जन आ रहे हैं, तो जब भी वर्जन अपडेट होगा तो हमें कोड में चेंज नहीं करना पड़ता था, सिंपली हम ऑब्जेक्ट को अपडेट कर देते थे। तो ओके. उसकी हम पूरी एक लाइब्रेरी बनाते थे, ऑब्जेक्ट रिपोजिटरी, और उस ऑब्जेक्ट को फिर हम अपने कोड में यूज करते थे। सिंपली हम कॉल, ड्रैग एंड ड्रॉप, या हम उसे सिंपली कॉल कर लेते थे। तो ओके अगर एक वेबसाइट में 10 पेज है तो हम ऐसे उस पे काम करते थे। करेक्ट. so same thing is applicable here also. Okay, because at the end it's a concept, right. So concept same ही होता है कहीं पे भी आप जाओ, right. So श्योर। what Gautam is talking कि for example our main purpose is in Selenium, और उसमें क्या होता है ना कि even though आपका अगर क्रोम का वर्जन भी अपडेट होता है ना, then we have to go update manually and all the things. ठीक है. तो this thing will not be in this RPA tools. Okay, when it will be applicable, आपका total स्क्रैच से आपका एप्लीकेशन बन रहा है एंड ऑल द थिंग्स वेयर इट इज एप्लीकेबल. और हो सकता है कि यू आर डूइंग यूजिंग दैट एलिमेंट्स मल्टीपल टाइम्स. ठीक है, कि आप क्या कर रहे हो, उसको मल्टीपल टाइम यूज कर रहे हो, तभी आपको उसका यूज होगा. अदरवाइज इट्स लाइक सिंपल सिलेक्टर्स ओनली वट एवर वी आर डूइंग करेंटली, राइट. तो आप यहाँ पे देखोगे ऑब्जेक्ट रिपोजिटरी, राइट. तो यहाँ पे क्या है ऐड न्यू एप्लीकेशन फॉर एग्जाम्पल, राइट. so I will give some name like कुछ भी दे दीजिए, RPA challenge, RPA challenge. ओके, तो क्रिएट एप्लीकेशन. ओके, यहाँ पे हम लोग आते हैं फिर क्रिएट एप्लीकेशन, राइट. गो हियर. तो हम लोगों ने ये नाम वाम अता पता सब दे दिया है यहाँ पे. ठीक है, न्यू लाइब्रेरी. तो अभी हमें क्या करना है कि वी कैन गो हियर, और ये आप क्या करो, कैप्चर एलिमेंट्स पे क्लिक कर दो. कैप्चर एलिमेंट, राइट. को आपको कौन से एलिमेंट्स कैप्चर करना है, तो गो हियर, राइट. फॉर एग्जांपल वी आर हियर ऐड एप्लीकेशन. एप्लीकेशन तो ऐड कर दी है हम लोगों ने. फॉर एग्जांपल विल डू इट, राइट. ये रिकॉर्डिंग से, राइट. तो वी हैव टू गिव द एप्लीकेशन. फॉर एग्जांपल आई एम गिविंग RPA challenge. ओके, राइट. देन स्टार्ट रिकॉर्डिंग. रिकॉर्डिंग स्टार्ट किया. फॉर एग्जांपल सिलेक्ट दिस ब्राउजर. ओके, यहाँ पे हम लोग चले गए कि व्हाट वी आर डूइंग हियर, वी आर डूइंग द टाइप इनटू, राइट. तो यहाँ पे जाइए, टाइप इन. ओके, तो यहाँ पे आप देखोगे कि दिस इज टाइप, राइट. इनपुट में इफ यू वांट टू चेंज समथिंग आप चेंज कर सकते हो.
ओके, राइट, नाउ इट्स गुड, सेव एंड कंटिन्यू। तो ये हो गया रोल एंड कंपनी के, ठीक है। अभी इसके बाद अगर फर्स्ट नेम के लिए करना है तो गो टू द फर्स्ट नेम, राइट। ये हो गया इनपुट, इसका सिलेक्टर्स वगैरह वट एवर यू वांट टू, डायनामिक वगैरह सब लोग हम लोग कर देंगे। एंड सपोज वी आर डन, राइट, सपोज वी आर डन, सेव एंड कंटिन्यू, और फिर क्लिक कर देंगे सेव ऑब्जेक्ट्स टू द लाइब्रेरी, राइट। तो बन गया हमारा लाइब्रेरी, ओके। अभी क्या करना है कि वी हैव टू क्रिएट अ स्क्रिप्ट, राइट, या स्टेप्स ये करना है। तो हम लोग क्या यूज करेंगे, यूज, या फिर आप यहाँ पे चले जाइए ऑब्जेक्ट रिपोजिटरी, लेट्स सी कि ये काम करता है, ड्रैग एंड ड्रॉप नहीं करता, राइट, हाँ, ओके। या फिर ये कर दो, यहाँ पे आप ड्रॉप कर दो, जैसे आप ड्रॉप करोगे, राइट, तो अपने आप क्या होगा, दैट एक्टिविटी विल गेट एडेड हियर, तो आप देखोगे ऐड हो गया। अभी हमें फर्स्ट नेम चाहिए, कहीं पे भी यूज करना है, ओके। इट्स नॉट द थिंग कि आप एक ही बार यूज करो, आप 10 बार यूज करो, ड्रैग एंड ड्रॉप, यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप करो, ठीक है। ये ऐसे पूछेगा क्या करना है, मैं टाइप इनटू, सिलेक्ट टाइप इनटू, राइट। तो ये टाइप इनटू का एक्टिविटी अपने आप पर, ठीक है। रोल इन कंपनी, यहाँ पे आप ये करो, जैसे आप ये करो, ये पूछेगा कि कौन सा एक्टिविटी है, टाइप इनटू, राइट। तो जो भी आएगा आपका टाइप इनटू, क्लिक, क्लिक, सब इसमें आ जाए, ठीक है। तो क्या है, ये दिस इज योर लाइब्रेरी। और हम लोग इसको क्या कर रहे हैं, यूज कर रहे हैं, जहाँ पे भी हमें जो चीज चाहिए, राइट। तो हम लोग क्या कर सकते हैं कि एट ए टाइम जो भी आपको एलिमेंट चाहिए हम लोगों ने कैप्चर कर दिया, राइट, एंड इट हैज स्टोर इनटू दिस ऑब्जेक्ट रिपोजिटरी, राइट। और जहां पे भी चाहिए आप उसको यूज करो, ठीक है। हाँ, इट तो इज क्लियर। हाँ, या वैसे ही राइट, मतलब सेम ही आपने जो भी कंसेप्ट है। देखा होगा, किया होगा, इट्स इट्स लाइक अ वेरी सिमिलर, यस, थैंक ठीक यू। है। हाँ, तो इसका मेन पर्पज वही है कि सपोज वी हैव टू यूज मल्टीपल टाइम्स कोई एलिमेंट्स है, तो दैट इज द मेन पर्पज ऑफ इट, ठीक है। और फिर मान लो कि इफ टुमारो, ओके, कि फर्स्ट इन कंपनी का सिलेक्टर चेंज हो जाता है, राइट। तो व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू गो टू द 10 टाइम्स, राइट। 10, अगर हम लोगों ने 10 टाइम्स फर्स्ट नेम यूज किया तो एवरी एक्टिविटी में जाके आपको अपडेट करना है। बट रिपोजिटरी में क्या होगा कि इफ यू आर अपडेटिंग हियर इट विल गेट रिफ्लेक्टेड एवरीवेयर, ठीक है। देन few things, okay, related to the Excel, right? I think Prince was saying related to the Excel, right? तो Excel में क्या होता है, वी आर हैविंग मतलब एंडलेस फंक्शन है, ओके। वो तो कोई मतलब अनलेस एंड अनटिल हम लोग एक्सप्लोर नहीं करेंगे विल नॉट एबल टू अंडरस्टैंड, राइट। बट फ्यू थिंग्स, राइट, कि जैसे हम लोगों ने आप लोगों ने भी फेस किया होगा ड्यूरिंग द ट्रेनिंग ऑर्डर सिस्टम, ओके। ट्रेनिंग ऑर्डर सिस्टम में आपने देखा होगा, इफ यू ऑब्जर्व इट प्रॉपरली, कि व्हाट हैपन जब ये कॉलम यहाँ पे ऐड होता है, राइट, ऑर्डर नंबर, राइट। तो ये सेल का साइज होता है, तो इट इट इट्स लुक लाइक दिस फॉर एग्जांपल, राइट। तो अगर आपको कॉलम रोज को ऑटो फिट करना है, ऑटो फिट मतलब क्या, कि बेस्ड ऑन द इस विड्थ, हाइट, ये एडजस्ट करना चाहिए, राइट। तो फॉर एग्जांपल इट शुड बी लाइक दिस, करेक्ट। तो इफ यू वांट टू ऑटो फिट रोज और कॉलम्स, राइट, आपको क्या यूज करना है, यू हैव टू यूज अ ऑटो फिट बेसिकली, राइट। तो आप देखोगे कि दिस लुक समथिंग डिफरेंट, राइट। तो आप यहाँ पे एक्सेल भी टाइप करोगे फॉर एग्जांपल, राइट, वी कैन सी वी आर हैविंग लॉट ऑफ डिफरेंट डिफरेंट एक्टिविटीज आर अवेलेबल, ओके। तो कुछ आप देखोगे विच इज ऑन एक्सेल लेवल, कुछ आप देखोगे कि वर्कबुक लेवल, राइट। तो दिस इज ऑलरेडी डिफाइंड कि वर्कबुक लेवल पे है या एक्सेल लेवल पे, राइट। तो डिफरेंस क्या है वर्कबुक लेवल और एक्सेल लेवल पे, जब आप कोई वर्कबुक यूज करते हो ना, तो वो फाइल ऑटोमेटिकली बैकग्राउंड में रीड हो जाएगा, बैकग्राउंड में इट विल नॉट ओपन द फाइल, ठीक है। बट अगर आप कोई एक्सेल वाला एक्टिविटी यूज करते हो तो इट विल ओपन द फाइल, जैसे कि अगर हम हमें रीड करना है एज ए ह्यूमन, तो इट विल ओपन दैट पर्टिकुलर फाइल, ठीक है। तो कुछ एक्शंस ऑब्वियसली सेल लेवल पे होता है या कॉलम लेवल पे होता है, तो ऑब्वियसली इट विल ओपन दैट फाइल, ठीक है। तो दिस इज ऑलरेडी
डिफाइन इन एंड ईच एंड एवरी एक्टिविटी, उसमें हम लोग कोई चेंज नहीं कर सकते। तो मान लो कि अगर आपको ऑटो फिट करना है, राइट राइट, तो ऑटो फिट, राइट, विल गो एंड टाइप द ऑटो फिट, ऑटो फिल बेसिकली, राइट। तो ये क्या बोलेगा, आप यहाँ पे चले जाइए, ये बोलेगा कि कहाँ पे यूज कीजिए, यूज एक्सेल फाइल यूज कीजिए। ओके, इसके अंदर ही आप ये यूज कर सकते हो। तो व्हाट वी हैव टू डू, यूज एक्सेल फाइल, यूज एक्सेल फाइल है, राइट। यूज एक्सेल के फाइल में ही हम लोग इसको यूज कर, ओके। बट स्टिल वी आर गेटिंग एरर, राइट। स्टार्ट रेंज वाज नॉट स्पेसिफाइड, राइट, एंड वर्कबुक पाथ, तो आप दे दीजिए वर्कबुक पाथ, कौन सा वर्कबुक है, फॉर एग्जाम्पल दिस इज माई वर्कबुक, ओके। बट नाउ आप यहाँ पे आ जाओगे तो इट इज स्टिल गिविंग एरर, व्हाई इट इज स्टिल गिविंग एरर, राइट। यूज एक्सेल फाइल, हाँ, आप चले जाइए यहाँ, कौन से इसके लिए करना है आपको, ओके, आई डिड नॉट कस्टम इनपुट, ओके, सो आई हैव गिवन, मे बी दिस इज ओपन, इसकी वजह से तो नहीं दे रहा है। अब गो हियर एक्सेल, ओके। जब आप ये पाथ, ओके, लेट मी डिलीट इट, ऑटो फिल करते हैं, ऑटो, राइट, नाउ गो हियर, फिल, इट इज नॉट फिल, पाथ तो हम लोगों ने दे दिया है, ठीक है। अब आप यहाँ पे आप देखिए, राइट, कि वी हैव गिवन दिस पाथ। अब जब आप ऑटो फिट रेंज, ओके, ये ऑटो फिल, सॉरी, हाँ, तो हमें रेंज करना है ना बेसिकली, तो वी हैव टू सिलेक्ट ये ऑटो फिट रेंज, राइट। और आप यहाँ पे क्या कीजिए, गो हियर, राइट, यहाँ पे भी नहीं दे रहा है, आई डोंट नो, ठीक। यहाँ पे आप जाओगे तो कैन यू सी, इट हैज लोडेड ऑल द शीट्स, यहाँ पे भी लोड होना चाहिए, व्हाई इट इज नहीं हो रहा, ठीक। तो आप देखोगे कि अब यहाँ पे आप जाओगे तो इट विल लोड योर ऑल द शीट्स, जो भी आपके शीट्स अवेलेबल है, इट विल गेट लोडेड। तो आप सिलेक्ट कर लो, शीट 1 है, सिलेक्ट शीट 2 है, एंड ऑल द थिंग्स, राइट, बट एट ए टाइम एक ही हो, करेक्ट। तो व्हाट वी कैन डू, अगर आप इसको रन करोगे, आउटसाइड, ओके, यूज एक्सेल फाइल, फिर भी ये एरर दे रहा है, राइट। तो व्हाट इट इज सेइंग, इट शुड बी अंडर एक्सेल प्रोसेस को, तो ये कहाँ पे होना चाहिए, एक्सेल प्रोसेस बुक के अंदर होना चाहिए, राइट। थोड़ा झंझट है यहाँ पे, इफ यू वांट टू गो विद दिस फीचर्स, राइट। तो आप यहाँ पे नाउ इट विल लुक गुड, पहले एक्सेल प्रोसेस को, फिर यूज एक्सेल फाइल, एक्सेल प्रोसेस को मतलब आपको कौन से एक्सेल पे काम करना है पर्टिकुलर इंस्टेंस, यूज एक्सेल में क्या है कि कौन सा एक्सेल यूज करना है, तो दैट एक्सेल वी आर यूजिंग, और फिर हमें क्या ऑपरेशन करना है वो देना है। तो व्हेन यू आर यूजिंग दिस एक्सेल थिंग, राइट, दिस इज मैंडेटरी, एक्सेल प्रोसेस स्कोप में होना चाहिए, फिर एक्सेल फाइल पाथ जो भी काम करना है, एंड देन ऑन द शीट लेवल कि आपको यहाँ पे क्या ऑपरेशन करना है, राइट। सो सपोज लेट मी क्लोज दिस, आप यहाँ पे अगर जाओगे, दिस इज योर फाइल, राइट, एंड देन डू दिस, ऐसे करके कुछ दे दीजिए, ओके, सेव दिस। जब आप इसको रन करोगे तो व्हाट इट विल डू, ये ऑटोमेटिकली ऑटो फीड कर देगा, जैसे हम एक्सेल से कर सकते हैं ना, सेम थिंग इट विल डू बाय यूजिंग दिस एक्टिव। कैन यू सी, देखोगे कि एक्सेल एक्सेल ओपन किया था इसने, बाद में क्लोज भी कर दिया, बट इट विल ओपन द एक्सेल इंस्टेंट, सी, राइट। तो इन दिस वे हम लोग ऑटो फीड वगैरह करना है तो वेरी वेल वी कैन यूज विद दिस ऑटो फीड, ठीक है।
आफ्टर दैट अगर आपको कोई फॉर्मूला लगाना है, राइट, इन एक्सेल वी कैन अप्लाई द फॉर्मूला, राइट। तो आप यहीं पे देख लेते हैं, ठीक है, कि इफ यू गो हियर कि आई वांट टू डू द एडिशन, तो हम लोग ऐसे फॉर्मूला लगाते हैं, राइट, हियर कि C2D2 का हमें एडिशन करना है, एंड फिर क्या होगा, वो फॉर्मूला लग जाएगा। तो सेम फॉर्मूला वी कैन अप्लाई फ्रॉम द एक्सेल ऑल्सो, ओके। सेम स्टेप्स फॉलो करना है, लाइक यहाँ पे। तो हम लोग क्या करेंगे, पहले रीड कर लेंगे फाइल, ठीक है। वी आर, और आप जहाँ पे वर्कबुक यूज कर सकते हो ना, वर्कबुक यूज कीजिए, ठीक है, क्योंकि इट विल डू फास्टर ऑपरेशन और एक्सेल। एंड फॉर दिस वर्कबुक इट इज नॉट नेसेसरी कि एक्सेल भी इंस्टॉल होना चाहिए। अगर आपके पास एक्सेल भी इंस्टॉल नहीं है ना, स्टिल इट विल वर्क। अगर आपका के पास कोई फाइल है विदाउट एक्सेल एक्सटेंशन, तो भी ये काम करे, ठीक है। तो रीड रेंज, राइट, हम लोगों ने क्या किया है कि यहाँ पे इनपुट डेटा दे दिया वेरिएबल, फिर हम लोग फॉर ईच कर रहे हैं। वाई वी आर डूइंग द फॉर ईच, बिकॉज वी हैव टू गो टू द ईच एंड एवरी सेल और वी हैव टू परफॉर्म द एक्शन। और यहाँ पे हम लोग काउंटर यूज कर रहे हैं, बिकॉज यहाँ पे क्या है, D2, C2, C3, C4, राइट, D4। तो हियर वी आर यूजिंग द काउंटर, और हम लोग क्या यूज कर रहे हैं, राइट सेल, राइट। तो वो फॉर्मूला आप डायरेक्टली यहाँ पे दे सकते हैं, ओके। ओनली थिंग हमारा फॉर्मूला क्या था, फॉर एग्जाम्पल इफ यू गो हियर, राइट, सम इज इक्वल टू ये वाला फॉर्मूला, राइट। तो हम लोग क्या करेंगे कि सी को अलग कर देंगे, बाद में ये जो है, राइट, इसको हम लोग किससे रिप्लेस कर देंगे, प्लस डॉट टू, प्लस डॉट टू, काउंटर डॉट टू स्ट्रिंग बेसिकली। तो काउंटर का वैल्यू भी बढ़ता रहेगा, 1 2 3 4, राइट। तो अकॉर्डिंगली है ऐड हो जाएगा विद इन द फॉर्मूला, ठीक है। तो इन दिस वे आप क्या कर सकते हो कि वी कैन अप्लाई द फॉर्मूला ऑल्सो, मैक्रो भी एग्जीक्यूट कर सकते हैं, पिवोट टेबल है, पिवोट टेबल भी कर सकते हैं, राइट। तो ऑल द एक्टिविटीज आर अवेलेबल, राइट। बट नाउ मोस्ट इंपॉर्टेंट, जस्ट 5 10 minutes, सो डोंट डिस्कनेक्ट। आप लोगों ने सुना होगा कि रेगुलर एक्सप्रेशन, राइट, आई थिंक मे बी मोस्ट ऑफ द टाइम प्रिंस ऑल्सो सेड कि रेगुलर एक्सप्रेशन, राइट। सो व्हाट इज द रेगुलर एक्सप्रेशन? तो रेगुलर एक्सप्रेशन क्या होता है, टू एक्सट्रैक्ट एनी पर्टिकुलर पैटर्न फ्रॉम योर इनपुट स्ट्रीम, राइट। पैटर्न, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल today's date is 1 2 sorry, today's date is 24/7/2024। तो मुझे क्या करना है कि यहाँ से आई वांट टू एक्सट्रैक्ट ओनली दिस पर्टिकुलर डे, ओके। या फिर ये जो हमारा था ट्रेनिंग ऑर्डर सिस्टम, ट्रेनिंग ऑर्डर सिस्टम, राइट। और कुछ भी आप लिख सकते हो कि नंबर 1 2 एंड 3, राइट। तो मुझे क्या करना है कि आई वांट टू एक्सट्रैक्ट ओनली नंबर। ये मेरा स्ट्रिंग है इनपुट, राइट। इट कैन बी हैव मल्टीपल रोज एज वेल, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो आई वांट टू एक्सट्रैक्ट नंबर्स फ्रॉम हियर, और आई वांट टू एक्सट्रैक्ट ओनली अल्फाबेट्स फ्रॉम हियर, राइट। तो ये भी हम कर सकते हैं बाय यूजिंग रेगुलर एक्सप्रेशन। तो पहले क्या था कि वी हैव टू राइट दोज रेगुलर एक्सप्रेशन, खुद से राइट करना होता था, या फिर वी आर हैविंग लॉट ऑफ डिफरेंट साइट्स, राइट, क्रिएट अ रेगुलर रेगुलर एक्सप्रेशन, ओके। तो ईमेल आईडी अगर फाइंड आउट करना है तो, राइट। तो वी आर हैविंग दिस वेबसाइट, तो हमें खुद से ये रेगुलर एक्सप्रेशन वगैरह करना पड़ता था, राइट। एंड देन वी हैव टू यूज इट, सी। बट नाउ आफ्टर adding this autopilot into the UI path, right, तो ये अपने आप एक्सप्रेशन भी करते क्रिएट। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे आप देखोगे कि आई वांट टू फाइंड आउट द डेट, ठीक है, ये मेरे पास डेट है, ओके। एंड फ्रॉम दिस आई वांट टू फेच दिस पर्टिकुलर डेट, राइट। तो आप यहाँ पे लिख दो, राइट, create a regular expression, create a regular expression to extract the date from the where input string variable,
ओके, राइट. मेक श्योर कि रेगुलर एक्सप्रेशन वर्ड यूज होना चाहिए, बिकॉज वी हैव टू फाइंड आउट पर्टिकुलर पैटर्न, राइट. फिर ये अपने आप ये रेगुलर एक्सप्रेशन बना देगा, राइट. इफ यू क्लिक हियर तो इट विल क्रिएट द रेगुलर एक्सप्रेशन. ठीक है. जैसे रेगुलर एक्सप्रेशन यू कैन सी इट हैज क्रिएटेड दिस रेगुलर एक्सप्रेशन. और फिर हम लोग क्या करेंगे, विल असाइन वन वेरिएबल. मैंने वेरिएबल आउटपुट किया, राइट. एंड इफ यू रन दिस, राइट, इट विल एक्सट्रैक्ट ओनली डेट फ्रॉम यू, राइट. कि जैसे आपको कोई नंबर से एक्सट्रैक्ट करना है, ईमेल आईडी एक्सट्रैक्ट करना है, राइट, या फोन नंबर एक्सट्रैक्ट करना है, कोई आईपी एड्रेस एक्सट्रैक्ट करना है फॉर एग्जांपल, राइट. So we can create a regular expression by using this autopilot. See, it is giving us the data. Okay. So this regular expressions also required. Okay. When we are doing some string manipulation, या कोई data हमें extract करना है, so we can use this to extract particular pattern from your string value. ठीक है. So now I'm done from